morning, student. Today lesson number 8, physiology and sports. In a physiology and sports, the four component is very important. The component is the strength, speed, endurance, and flexibility. The four component is very important, but some questions are related for the organs, the effect of the exercise on cardiovascular systems, and effect on exercise on respiratory systems, effect on exercise on muscular systems, muscular, respiratory systems, and cardiovascular systems. Cardiovascular system related to the heart and blood, veins, kidney, and lungs, and heart. And respiratory systems related to the diaphragm, the lungs, alveoles, deep inner deep axial, and bronchus. And muscular system is related to the muscles, veins, muscle types, and blood vessels. So today is the effects of the exercise on respiratory systems. Respiratory system पर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार हम लोग जब चलते हैं, जब हम स्टार्टिंग हम रनिंग वॉकिंग की हम देते हैं तो सांस हमारी जो है बहुत तेजी से डीप इनर डीप एक्सहेल होती है. ठीक, धीरे धीरे जो ब्रीथ है वो कंट्रोल होने लग जाती है. रेस्पिरेटरी टाइटल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. जो 500 सीसी 1000 सीसी की जो लंग कैपेसिटी है वो जो है बढ़कर 250 के करीब हो जाती है. तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में. द इफेक्ट ऑन द एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, क्या इफेक्ट होता है. नंबर 1, स्ट्रॉन्ग विल पावर. Exercise effect very important in the respiratory system, on the respiratory systems. First, the strong willpower. What is strong willpower? Regular exercise increase the willpower of the individual. For example, pranayam, specific exercise for lungs, increase the willpower of the door. स्ट्रॉन्ग द विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है. जो हमारी आंतरिक शक्ति है उसको जो है एक उसको मजबूत बनाती है. किस चीज से? प्राणायाम, योगा, एरोबिक एक्सरसाइज, रनिंग ऑन द स्पॉट, यौगिक रनिंग, सूर्य नमस्कार, walking, running, light running, jogging, and many type of exercise take the willpower hours strong. But the pranayam is very important for the strong willpower and breathing systems, for breathing system, respiratory systems. First, the pranayam, the Surya Bhedi pranayam, Chandra Bhedi pranayam. Nadi Shodhan pranayam, Brahmari pranayam. The 8 types of the pranayam in the yoga is very important. अगर हमें प्राणायाम नहीं भी आता है तो गहरी लंबी सांसों को लो और छोड़ो. देखिए, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, डीप इनहेल डीप एक्सहेल. This is a general normal pranayam.
सांसों को लेना और छोड़ना. Take the strong willpower in our muscles and body. Exercise is very important. And develop the lungs and proper breathing, inhale and exhale, and not a problem for the exhale and inhale. Number 2, increase in the tidal air capacity. Increase in the tidal air capacity. Tidal air capacity is the amount of the air that flow in and out of the lungs and each quite respiratory movements. But tidal air capacity is the amount of air that can be breathed in and breathed out. Breathe in and breathe out. Over and above the tidal air by the deepest possible inspirations and expirations. Okay? Inspirations and expirations respectively. It is estimated at about 500 to 800 cc. After doing regular exercise, it has been noted that this tidal air capacity can be increased. Tidal capacity. सांस को जब हम लेते हैं और छोड़ते हैं, जो सांस इकट्ठी होती है, जिस बॉक्स में हम उसको रोक के रखते हैं, the tidal capacity. Okay. Number 3, decrease in rate of respirations. Decrease in the rate of respirations. It is certain that when a beginner starts to exercise, his rate of respirations increases. But when some individuals performance exercise on a daily basis, her of the respirations of the rest decrease in comparison to the earlier stage. जैसे हम शुरू में हम जो प्रैक्टिस में नहीं होता है, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, इंक्रीजेस होती हैं, ब्रीथेस बढ़ती हैं बहुत तेजी से और सांस तेजी से जो है वर्क करती है. पर लेकिन एक्सरसाइज, रेगुलर कंटिन्यूटी एक्सरसाइज में, वॉकिंग में, रनिंग में, योगा में रेट ऑफ रिस्पिरेशंस वो डिक्रीज होने लग जाती है. आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी सांस लेना और छोड़ना कितना सॉफ्ट हो जाता है. ज़्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम्स को, आपके लंग्स को. सांस लेने और छोड़ने की जो है तरीके को ज़्यादा भारीपन नहीं लगेगा सांस लेना और छोड़ने में. डिक्रीज रेट ऑफ रिस्पिरेशन. नंबर 4, strength diaphragm and muscles. Strength diaphragm and muscles. Diaphragm जो हमारी लंग्स की जो डायफ्राम है उसकी मसल्स ताकतवर हो जाती है रेगुलर एक्सरसाइज से, रनिंग से, वॉकिंग से, योग से, योगिक क्रियाओं से, प्राणायाम से. Strength diaphragm and the muscles. Regular exercise strength the diaphragm and the muscles of the chest. Okay. Fourth point is complete. What is the fourth point? Strong willpower, increase in the tidal air capacity, decrease in the rate of respirations, and strain diaphragm and the muscles.
वेरी इजी पॉइंट, अगर हम आराम से इसको समझें, पढ़ें, बहुत इजी है, हमें जरूरत ही नहीं है दोबारा से बुक को देखने की, अगर हम इसको ढंग से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं. What is the point? Effect of the exercise on the respiratory systems. Number 1, strong willpower. Number 2, increase the tidal air capacity. Number 1, strong willpower, increase the tidal air capacity, decrease in the rate of respirations, and strengthen diaphragm and the muscles. Number 5, avoid second wind. Avoid second wind. What is the second wind? आइए समझे इसको. For a beginner, the stage of the second wind, the ability to breathe freely after having been out of the breath, is indeed a crucial stage. But for the person who does regular exercise, it is hardly felt. Sometimes a well experienced athlete does not feel it is in his course of activities. Once again, for a beginner, the stage of the second wind is indeed a crucial stage, but for a person who does regular exercise, it is a hardly felt. Sometimes a well-experienced athlete does not feel it is in his course of activities. सेकेंड विंड को अवॉइड करते हैं. फर्स्ट विंड कहां से आती है हमारे बॉडी में? नेजल से, और सेकेंड विंड हमारी आती है आपकी माउथ से. तो जब हम लोग जो है स्टार्टिंग में जब हम प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज की, रनिंग की, जॉगिंग की, ट्रैकिंग की, क्लाइंबिंग की, तो सेकेंड विंड जो है शुरू हो जाती है थोड़ा जल्दी. मुंह से आप सांस को लेना शुरू कर देते हैं, ये सेकेंड विंड. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में होती है, जब हम डेली हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्किंग कैपेसिटी हम बढ़ा देते हैं अपनी एक्सरसाइज की, तो सेकेंड विंड अवॉइड होने लग जाती है. हम सेकेंड विंड को नहीं लेते हैं, हम लोग जो है नोज से ही सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं. नॉट रिक्वायर्ड द सेकेंड विंड. आइए नंबर 6, unused alveoli become active. Unused alveoli become active. जो हमारे डायफ्राम है, जो लंग्स है, उसमें एलोवीज जो हैं, एलोवेलिस जो अंदर एक्टिव नहीं है, वो चार्ज हो जाते हैं. उनका वर्किंग टाइम जो है बढ़ना शुरू हो जाता है. हमारा पूरा लंग्स वर्क करता है. सांस हम पूरी लेते हैं, पूरी चेस्ट में सांस जाती है और बाहर आती है. तो अनयूज्ड एलोवेलिस बिकम एक्टिव. रेगुलर एक्सरसाइज एक्टिव द अनयूज्ड alveoli become much amount of oxygen is required in vigorous and prolonged exercise. The passive alveoli also become active. जो डेड पड़े रहते हैं एलोवेरीज, वो एक्टिव हो जाते हैं एक्सरसाइज से, प्राणायाम से. ओके. नंबर 7, इंक्रीज इन एंडोरेंस. एंडोरेंस पावर इंक्रीज होती है. इंक्रीज द एंडोरेंस एक्सरसाइज से. इट्स एक्सरसाइज इज द परफॉर्म रेगुलरली एंड for a longer period
in increased endurance, and activity can be done for a longer period without taking any rest. Those who do not perform exercise have a less endurance. They cannot continue exercise for a long duration, so it can be eluded the exercise, increase the endurance of the individuals. एंडोरेंस पावर बढ़ जाती है बॉडी की, लंग्स की, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स की, इनहेल एक्सेल एक्सेलरेशन की, रेगुलर रनिंग से, एक्सरसाइज से एंड प्राणायाम से. नंबर 8 इज अ इंक्रीज इन रेजिडुअल एयर वॉल्यूम्स. इंक्रीज इन रेजिडुअल एयर वॉल्यूम्स. Residual air is that amount of air which is left in the lungs after exhalations. If an individual perform regular exercise, athlete residual air capacity increase in comparison to an individual who does not perform regular exercise. Okay, रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम नहीं करते हैं तो हमारी रेजिडुअल एयर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी, और अगर हम रेगुलर करते हैं तो उसमें इंक्रीजमेंट आता है. ओके, 8 पॉइंट इज कंप्लीट. नंबर 9. Number 9 is the increase in size of lungs and chest. So very important. Increase in size of lungs and chest. When a person performs exercise regularly, athlete required more amount of oxygen. Is inhale more amount of the air during exercise. Consequently, his lungs and chest are exercised. After some period, the size of his lungs and chest increase. अधिक गेम खेलना, more walkings, more take the runnings and do the pranayam exercise, trackings and climbing with the increase your chest size and the lungs, and take the more oxygen in your lungs and increase the vital capacity, increase the volume of your chest. So very important for the exercise. And after exercise, take the more good feel with our body. Number 10, prevention from disease. Many type of disease. Prevention with the exercise, games and yoga, and athletes and aerobic exercise. So this point is a very important, prevention from the disease. The speed of the inhalations and exhalations. The speed of inhalations and exhalations become less is in an individual who does not do any exercise. The waste product start streaking to athletes long and with the passage of time. Athletes' lungs get damages on other hand if we perform regular exercise. And more type of disease not come with your oxygen and your lungs and your bodies. Okay.
Number 11. Number 11 point is the body posture remain correct. Sometimes your chest bend the front side. Sometimes your chest moved by the teaser by your chest. So sometimes your posture is not correct with your chest and bodies. Number 11, body posture remain correct. By doing a regular exercise, prevention from disease. We will have an inhale and exhale more air speedily by doing. So the waste product will never stick to our lungs. This product will come out automatically and the lungs will not be damaged. In the way it can be that by doing exercise we can prevent various diseases. Number 11, body posture remain correct. By doing the exercise, the strength of the muscles and increase within the turn keep the body posture in correct positions. Also, posture deformities do not occur. If there is any physical deformities, it's removed by the doing regular exercise. Number 12 is the increase in the vital air capacity. Vital air capacity, the lungs strength and volumes. It is the amount of air which an individual can inhale and exhale with maximum effort. Its capacity varies from the 3,500 cc and 4,500 cc in a normal adult. It is the sum of the tidal volume, inspiratory reserve volume and expiratory reserve volumes. With regular exercise, a person capacity may increase up to the 5,500 cc. The topic is related for the exercise and respiratory systems. This is a complete and so one last topic, effect of the exercise on muscular strength. I will take the class in the Saturday. So complete my topics, but the related of the questions is very important for the respiratory systems. Discuss any 5 effects of the exercise on respiratory systems. 5 effects. To the 5 effects. Sometimes come the question in the exam. Discuss any 5 effects of the exercise on vital respiratory system. 5 effects. What is the 5 effects? Strong willpower, increase the tidal air capacity, decrease in the rate of respiratory systems, strengthen the diaphragm and the muscles, and avoid second wind. Very important. Increase the size in lungs and chest. So very important these questions for the exam. Sometimes the question are come, explain what is the effect of the exercise on respiratory system. So this is very important, and 3 marks in the questions related to the discuss any 3 effect of the exercise on the respiratory system. The 3 marks questions. Give the 3 effect on the exercise. Okay, students. Thank you very much. My topic is complete, but do the very well in your copy with assignment questions. And thank you very much.